हेलो हेलो गाइस, गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर। सो गाइस, आज बहुत एक यूनिक वीडियो लेकर आए हैं जो आपने मुश्किल है कभी देखी हो। तो लिविंग मतलब इंडियन मिडिल क्लास कॉस्ट ऑफ लिविंग वर्सेस पाकिस्तानी मिडिल क्लास कॉस्ट ऑफ लिविंग। बिल्कुल। मतलब इंडिया की और पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास सेगमेंट है, जो मतलब मिडिल इनकम जो कमाते हैं, दरमियाना तबका उनकी जो है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया में कैसी है और पाकिस्तान में मतलब कैसी है। एक बहुत यूनिक ये वीडियो होने लगी है। पहले देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट डाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। Yo, what's up everybody? It's 2025 and the world is changing faster than ever. But one thing that never gets old is the age-old rivalry, the clash of the titans. No, not Batman and Superman. I'm talking about India and Pakistan. We're diving into the present, exploring life in these two South Asian powerhouses. Think of it as a cultural expedition, a deep dive into everyday experiences. From Mumbai's bustling streets to Lahore's vibrant bazaars, we're breaking down the cost of living, tech scene, and housing market. Stay tuned for an in-depth look at how these cities are evolving in 2025. Alright, let's get down to brass tacks, or should I say rupees and, well, more rupees. When we're talking about lifestyle, it all starts with the economy. You can't enjoy the finer things in life if you can't afford the basic things in life. Now, in India, the average Joe, or should I say the average Arav, is bringing home around $452.11 a month after taxes. Meanwhile, in Pakistan, our guy Hamza is looking at about $239.31. Now, before we jump to conclusions, it's important to remember that cost of living varies wildly within each country. But on the surface, it seems like Arav's got a bit more wiggle room in his wallet for those weekend biryani binges. For instance, electricity in India costs around 8 cents per kWh, while in Pakistan, it's about 10 cents per kWh. Basic utilities, including heating, cooling, water, and garbage, average $30.50 in India and $40.75 in Pakistan. Internet? You're looking at $13.50 a month in India and $20 in Pakistan. A liter of milk costs 50 cents in India and 70 cents in Pakistan, while a loaf of bread is 40 cents in India and 60 cents in Pakistan. A kilogram of rice is 90 cents in India and $1.20 in Pakistan, and a dozen eggs are $1.20 in India and $1.50 in Pakistan. Gasoline? It's $1.10 per liter in India and $1.20 in Pakistan. And a monthly public transport pass will set you back $10 in India and $12 in Pakistan. पाकिस्तान इधर भी महंगा है, इनकम भी कम लेकिन Let's talk about putting a roof over your head. Because whether you're in Delhi or Karachi, rent is going to be a pain in the, you know what? In India, a one-bedroom apartment in a major city center will set you back around 16,544 rupees and 2 paisa. Now hop on over to Pakistan and that same apartment will cost you about 31,219 rupees and 83 paisa. Now I know what you're thinking. Trevor, my man, you're throwing all these numbers at me. And you're right, but here's the takeaway. Housing costs are a mixed bag. You might find a steal in Pakistan one day and get completely ripped off in India the next. It's all about knowing where to look. कौन सी जगह पे ले देखना। Chapter 3. Tech Wars, Smartphones and Laptops. Look, we live in a digital age, people. You can't tell me you're living your best life if you're rocking a Nokia brick phone from 1998. So let's talk tech, baby. In India, the smartphone market is booming. We're talking cutting-edge models, fancy features, the whole shebang. So yeah, whether you're a tech whiz or just need a phone to call your mom, both countries have got you covered. Prices of technology. Chapter 5, The Price is Right. Or is it? Cost of living comparison. Alright folks, buckle up because we're about to dive into the nitty-gritty, the overall cost of living. Now this is where things get really interesting. In India, some things are surprisingly affordable. Public transport, for example, is your best friend, especially if you're not trying to navigate the chaos that is rush hour traffic in Mumbai. Groceries are also relatively easy on the wallet. But then you've got Pakistan, where things like entertainment and dining out can be a bit more expensive. Look, at the end of the day, it all boils down to your priorities. Are you a foodie who loves to explore new restaurants? Let's talk about basic utilities like electricity and internet. In India, electricity and basic utilities are generally cheaper compared to Pakistan.
Internet costs, however, can be quite similar in both countries, with slight variations depending on the नहीं, provider. When it comes to daily essentials like milk, bread, rice, and eggs, India tends to have lower prices. Gasoline is another area where India has a slight edge in affordability. And if you're relying on public transport, a monthly pass in India is generally more budget-friendly than in Pakistan. सस्ता है मतलब अंदाजा लगाओ Chapter 5, The Verdict. So, who wins? So, who emerges victorious in this epic battle of lifestyles? Well, my friends, it's not that simple. It's like comparing biryani and butter chicken, both delicious, but it all comes down to personal preference. India might have the edge when it comes to average income and a wider range of tech gadgets, but Pakistan holds its own with more affordable housing options in certain areas. Ultimately, the better country depends on what you value most. Are you all about that hustle and bustle, big city life with a side of cutting-edge tech? India might be your jam, or do you prefer a more laid-back vibe where you can enjoy a good cup of chai with friends without breaking the bank? Pakistan might be more your speed. The Great Debate. Join the conversation. Well, folks, there you have it. We've journeyed through the streets, explored the markets, and crunched the numbers to give you a glimpse into what life is really like in India and Pakistan. But this isn't just about me giving you a one-sided story. I want to hear from you. Did any of these insights surprise you? Which country's lifestyle... भाई हमें तो ये पता है भाई, इसी से तो वीडियो खत्म। भाई साहब सीधी सी बात है, हर चीज इंडिया में सस्ती है और पाकिस्तान में महंगी है। चाहे वो गाड़ियां हो, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, चाहे वो सब्जियां फ्रूट हो। मैं कहता हूँ दुनिया की हर जो मतलब बेसिक जो नेसेसिटीज होती हैं इंसान की, सारी चीजें भारत में सस्ती हैं और पाकिस्तान में। मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रॉपर्टी की जो और मजे की बात आपको बताऊं, उधर एवरेज इनकम क्या है 450 पर महीना। मतलब इंडिया का एवरेज बंदा, मतलब एवरेज निकाला जाए 450 रुपया महीना कमाता है। इधर 230 में 250 रुपया महीना पाकिस्तान में कर लो, $200 का फर्क है। $200 का फर्क। अगर डॉलर में खाली इनकम, अच्छा इनकम उधर ज्यादा है, चीजें सस्ती हैं, इधर इनकम कम है, चीजें महंगी है। ये ना है, ये फर्क है। उधर बिजली कितनी सस्ती है, ये बिजली कितनी सस्ती है, उधर रेंट सस्ता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस। ये चीज मैं मानूंगा, प्रॉपर्टी इंडिया में बड़ी महंगी है, क्योंकि जाहिर बात है मुंबई और ये दिल्ली इन एरिया में करोड़ों का एक अपार्टमेंट मिलता है। जिस तरह की डेवलपमेंट इंडिया में हो रही है ना, वो पाकिस्तान में अगर हो जाए ना, ये पाकिस्तान भी उधर से भी महंगी हो जाए। ये जाहिर बात है इंडिया एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, वो एक बिजनेस के मौके उधर दे रहा है, बिल्कुल जाहिर बात है हर चीज है भाई प्रॉपर्टी। अब तुम देखो दूसरे देशों जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उधर प्रॉपर्टी का रेट अब देखो चाइना में कितनी महंगी है, मुंबई में कितनी महंगी है, अच्छा इस तरह, और यूरोप में कितनी महंगी है, अमेरिका में कितनी क्यों महंगी है, क्योंकि जो जगह ज्यादा डेवलप्ड होती है, देखो खाने पीने की चीजें पाकिस्तान में महंगी, इंडिया में सस्ती। मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी बात ये है, अगर वो देखो पैसा कम कमा रहे हैं ना, फर्ज करो, तो वो चीजें भी उस लिहाज से सस्ती हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इधर आप एक जूस लेते हो, जूस वो 80 रुपए का, 90 रुपए का, छोटा वो इतना नहीं आता, 80, 90, 70 इतने का, और इंडिया में 10-15 रुपए का, या बहुत भी होगा 20 का। तो ये फर्क है भाई, ये बहुत से फर्क है। हर चीज, सब्जी देख लो, फ्रूट देख लो, ड्राई फ्रूट देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम देख लो, मोबाइल पैकेजेस देख लो, मोबाइल फोन देख लो। पाकिस्तान में प्राइस क्या है, इंडिया में क्या है फर्क? आईफोन उधर बन रहा है, आईफोन उधर सस्ता है, हमारे पास 7-7 लाख रुपए का आईफोन पड़ रहा है। यही तो बात है भाई। तभी तो मोबाइल टेक्नोलॉजी, खाने पीने की चीजें, हर चीज इंडिया में। और उधर मिडिल क्लास इसलिए भी थोड़ी खुश है ना यार, देखो वो जितना कमाते हैं ना, वो फिर भी मंथ के एंड में अपने लिए बचत बचा लेते हैं, वो बचत कर लेते हैं। पाकिस्तान में हमारे पास ये सीन नहीं है। अगर 2 लाख भी कमा रहा है ना एक फैमिली, मतलब 7-8 बंदों की अगर फैमिली है, तो 2 लाख भी आपको पूरे नहीं होंगे, नहीं पूरा होगा। आप उसमें से बचत नहीं कर सकोगे। बहुत कम लोग होते हैं जो बिल्कुल कंजूसी से अगर बहुत रहोगे वो करोगे। और तुम ये बात जो एवरेज जो 30-40 हजार तनख्वाह है पाकिस्तानियों की, इसमें तो कुछ भी नहीं बचता। तुम एक और बात नोट नहीं कर रहे हो, इंडिया में कोई ऐसा दिन नहीं आता जहां पर त्योहार न चल रहा हो। उधर भी वो खर्चा करके तब भी बचाते हैं। सही बात है। हर महीने, एक महीने में त्योहार चल रहे हैं, हर महीने वो त्योहार अपने मनाकर सब कुछ करके उनको बचत हो जाती है। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय बता लो। आप लोग बहुत ज्यादा खैर